Bismillahirrahmanirrahim. Welcome back. In this video, we will try to write a CNC program for a single operation that will be performed on the lathe machine. Let me briefly explain the figure. So this is a side view of the workpiece which is held in the chuck of the lathe machine. So ये chuck है and this is the workpiece and suppose the overall diameter of the work is 80 millimeter and we want to perform a simple plane turning operation at the end of the workpiece. The length of this total plane turning operation is let us say 75 millimeter and the final diameter will be 60 millimeter. So the diameter of the plane turning section will be reduced to 60 mm. So this means that the depth of cut for this operation will be 10 millimeter. So अगर आप 10 millimeter depth of cut लेते हैं तो it will remove 20 millimeter overall material from the workpiece, because as it is a prismatic symmetric workpiece and it will be revolving, so half of the material will be removed in one half rotation and another half material will be removed in the another half rotation of the workpiece. So overall one revolution में it will remove a total of 20 millimeter stock from the workpiece. So keep this in mind that the depth of cut for this operation will be 10 millimeter. So let us say the tool on which we want to perform this plane turning operation is held on a machine turret, and let us say the tool location is at tool number 3 for example. So turret पे टूल नंबर 3 जो है वो आप यूज़ करना चाहते हैं इस टेपर प्लेन टर्निंग ऑपरेशन के लिए. So if you want to write a CNC program for that, what will be the steps that you will follow? So normally जब आप एक CNC प्रोग्राम डिज़ाइन करते हैं तो उसमें ये 3 स्टेप्स होते हैं. So you have to start with the program setup and then material removal operation, जो भी operation आप define करना चाहें वो आप करेंगे, and then you will have to shut down the system. Program setup और machine setup में initially you will prepare the machine to start the operation, और machine preparation में different parameters जो है वो involve है. The first one is the cutting tool, so you will have to locate the appropriate tool that will be used to carry out the operation. Secondly, before the start of operation you have to turn on the spindle. अगर coolant आपने on करना है, for example if the material of the workpiece is very hot and you want to dissipate the heat, so you can use coolant, so you will have to turn on the coolant also. कटर को आपने appropriate place पे locate करना होगा, and after that you will start the actual process which will be a plane turning in this case. So what I told you in the previous video is that in CNC machines basically we define the relative moves in between the workpiece and the cutting tool. So as it is a lathe machine operation, so lathe machine operation में workpiece जो है the job stays at its own place, it is only revolving, and all the axial or rotation moves will be given to the cutting tool. So keep this data in mind that on the turret
the tool number is 3. We will use metric system because the dimensions are in millimeter, और आपने प्लेन टर्निंग ऑपरेशन जो है वो परफॉर्म करनी होगी. तो लेट अस स्टार्ट विद द फर्स्ट स्टेप विच इज़ द प्रोग्राम सेटअप. ठीक है. तो प्रोग्राम सेटअप में आपने इनिशियली जो मशीन है उसको आपने प्रिपेयर करना होगा. ठीक है. सो द फर्स्ट थिंग that you should tell to the machine is about the system of units and the medium. कि units क्या है और किस medium में आप ये units जो है वो define करेंगे. Of course the medium is coordinate system, but within the coordinate system you can use incremental system or you can use the absolute system. सो यहाँ पे हम एब्सोल्यूट सिस्टम यूज़ करेंगे और सिस्टम ऑफ यूनिट्स जो है वो हमारा मैट्रिक सिस्टम है. सो साथ साथ में कोड की लिस्ट आपको आपके साथ है, स्लाइड में भी है, बुक्स में भी है, सो यू कैन रेफर टू द टेबल, बट हेयर इन द प्रोग्राम आई विल ट्राई टू एक्सप्लेन दोस कोड्स. सो इनिशियली एब्सोल्यूट सिस्टम से भी पहले आपने सिस्टम ऑफ यूनिट्स डिफाइन करना होगा कि कौन सा सिस्टम है. सो G20 और G21 का जो कोड है दे आर यूज्ड फॉर डिफाइनिंग द सिस्टम ऑफ यूनिट्स. सो हेयर G20 जो है वो इंच सिस्टम के लिए यूज़ होता है और G21 जो है वो मैट्रिक सिस्टम के लिए. सो आवर सिस्टम ऑफ यूनिट इज़ मैट्रिक. सो आई विल राइट G21. So this will be my first code of the CNC. Then what type of coordinate systems you want to use. So we are interested in the absolute system. So G90 मैं लिख दूंगा. So G90 is used for absolute system. G91 code is used for incremental system. So you will have the table, और अगर आपको याद करने की ज़रूरत भी नहीं है, this will come in your mind if you practice more. Otherwise you can always go back to the reference tables और वहाँ से सर्च करके आप appropriate code जो है वो प्रोग्राम में इंसर्ट कर लेंगे. सो G21 मैट्रिक सिस्टम और G90 जो है वो एब्सोल्यूट सिस्टम में है. वाई वी राइट दिस एट द बिगिनिंग ऑफ अ CNC प्रोग्राम. जब आप एक CNC प्रोग्राम, प्रोफेशनल CNC प्रोग्राम रीड करेंगे, सो you will see these codes always on the top of the program. And this is because the machine do not know the current system of units for your program. हो सकता है कि आपसे पहले किसी ने ये मशीन यूज़ किया हो और उसका प्रोग्राम जो हो वो इंच सिस्टम में हो. You know, so the machine would be then set to inch system. और जब आप प्रोग्राम डेटा इनपुट करेंगे, so it will read those values as inches, not millimeters. So it is always better to first set the G20 or G21 code at the beginning of the program, so that it is made sure that the system of units will be your desired system of units. And similarly, maybe someone has changed the machine setting to G91 before you. हो सकता है कि आपसे पहले जो प्रोग्राम रन हुआ हो तो वो इंक्रीमेंटल सिस्टम में रन हुआ हो. So if you want to use absolute system, so you will write G90. So it is always good practice to tell the machine that my system of unit is metric or inch, and I prefer either absolute system or incremental system. ठीक है ना. So ये दो कोड जो है वो आपको स्टार्ट में देने पड़ेंगे हर एक CNC मशीन प्रोग्राम जब आप स्टार्ट करना चाहें.
Then next step is to uh, come up with the tool कि आपने जो tool use करना है. In this case, if let us say on the turret location, if it is tool number 3, so maybe जो current tool post pull पे लगा हो वो tool number 1 हो या tool number 5 हो या tool number 6 हो. So you do not know the current tool. So it is always better to first set up the tool also. You know? So my next step will be to set up the tool. To tell the machine that I want to use tool number 3. So format में simply आप लिख सकते हैं tool का जो command है that is M6. So either you can write M6 tool number 3 or you can write tool 3 or M6. In either case it will interpret it as the tool change command. But it is always better to first use the code and then write the desired specifier or instruction, whatever instruction you want to give to the machine. So मैं M06 लिख दूंगा. So it will activate the tool change mode of the machine, and then for tool the prefix that is used is T. So it will take tool number, and tool number जो भी आप देंगे, for example if I write tool 3, it will pick tool number 3. So if there is some other tool presently located on the tool post, so the turret will come and it will remove that tool, और जो आपका desired tool होगा that tool number will be placed on the tool post. तो वो tool आपका desired जो है वो आ गया है, which is tool number 3. So अब ये steps जो है ना, ये program setup है, machine setup है basically. So you are setting up the machine. So now you have defined the system of units. आपने absolute system define कर दिया है. Appropriate tool जो है वो आपका आ गया है. There is another useful command that normally we can use. और अगर वो आप use नहीं भी करते तो still the program will work. But let me include that also. G96 का एक useful option है. G96 is used for constant surface speed. So बाज़ औक़ात diameter जो है वो change होता रहता है. For example, if you have step turning operation or facing operation, so if the tool moves, let us say, towards the workpiece, so diameter आप देखें कि continuously आपका vary हो रहा है. और जो cutting speed होती है that depends on the diameter. जो cutting speed का formula है that is pi dn. So when the d varies, cutting speed will vary. So if you want to keep the cutting speed at constant value, so you can use this code which is G96. For G96 में आप cutting speed की जो भी value देंगे, so whatever is then the diameter or feed rate जो भी होगा, the machine will automatically maintain that cutting speed during all of the operation. So let us say if I say G96 and S1, let us say 190. So the cutting speed will always be 190 millimeter per revolution या millimeter per minute जो भी मोड होगा मशीन का, तो उस पर आप सेट कर सकते हैं. So this is only for your reference. अगर एग्ज़ाम में क्वेश्चन आता है तो अगर उसमें आप G96 मेंशन ना भी करें तो ठीक है, या अगर मशीन पे आपने प्रोग्राम करना है और G96 का कोड यूज़ नहीं हुआ तो your program will be perfect. So this is just for the safety. If you want to have a proper surface finish of the workpiece throughout the operation, so then you can use the G96 command. So this is for your reference. And then
Now there are two possibilities. For the spindle speeds, you can start spinning the spindle at this point, or first you can move the cutter to some desired location, और उसके बाद अगर आप spindle जो है वो on करना चाहें तो you can. But let us start the spindle at this point, क्योंकि बाकी पैरामीटर्स जो है वो हमने डिफाइन कर दिए हैं, एंड नाउ द मशीन इज़ रेडी टू स्टार्ट द ऑपरेशन. सो स्पिंडल स्पीड के लिए जो कमांड आप यूज़ करते हैं दैट इज़ द एस, ठीक है ना. सो इफ़ यू डायरेक्टली लाइक राइट एस और उसमें कुछ स्पीड आप दे दें, फॉर एग्जांपल एस 2000 में देता हूँ, सो द स्पिंडल विल स्टार्ट स्पिनिंग एट 2000 RPM. बट इफ़ यू राइट ओनली एस 2000 और इस प्रोग्राम को आप एग्जीक्यूट करते हैं तो दिस विल गिव यू an error message, and this is because we have given the spindle speed but have not yet given the direction of spinning. So the spindle can rotate in the clockwise direction or in the counterclockwise direction. So अगर spindle आप on off करना चाहते हैं तो उसके साथ आपने जो spindle direction है वो भी specify करनी होगी, otherwise it will give you the error message. So M3 अगर मैं कमांड देता हूँ तो 3 कमांड्स हैं, ये भी टेबल से आप देख सकते हैं. सो M3 इज़ यूज्ड फॉर क्लॉकवाइज रोटेशन, M4 जो है वो काउंटर क्लॉकवाइज रोटेशन के लिए यूज़ होता है, एंड M5 इज़ यूज्ड फॉर स्पिंडल स्टॉप. सो कीप दीज 3 कोड्स इन माइंड, M3, M4 एंड M5. M3 is for spindle forward direction, M4 spindle reverse, and M5 is spindle stop. So this will be my third block of the CNC program. Also remember that you can write this code in this block also. So if अगर मैं लिखता हूँ G96 S190 और उसके बाद जो है वो मैं M3 और S2000 लिखता हूँ, so it will work. And as I said that it is always better to write the code first. So मैं अगर M03 पहले लिख दूँ and then S2000, so it will be the right format for me, ठीक है ना. So हर एक ब्लॉक शुरू होने से पहले I am now able to see that ये कौन सा कोड है और ये क्या करेगा, ठीक है ना. So M3 will start the spindle in the forward direction. At what speed? The speed will be 2000 RPM. So this is how you will write the program. So अब आप देखें तो तकरीबन ऑलरेडी जो मशीन सेटअप प्रोसीजर है वो आप कंप्लीट कर चुके हैं, ठीक है ना. यू हैव स्टार्टेड द स्पिंडल, सरफेस स्पीड आपने ऑन कर दी है, आपका डिज़ायर्ड टूल जो है वो ट्रैक पे आ गया है, सिस्टम ऑफ यूनिट्स भी डिफाइन हो गया है G90B. सो नाउ यू कैन स्टार्ट द ऑपरेशन. अब ऑपरेशन स्टार्ट करने के लिए यू विल हैव टू मूव द कटर टू दिस डिज़ायर्ड लोकेशन और उसके बाद ये ऑपरेशन आपने स्टार्ट करना हो. बट इनिशियली one important thing that we missed in these codes is the initial tool location. वो आपको नहीं पता. So it is very very important to first set that location, जो कि मैं यहाँ पे डिफाइन कर रहा हूँ, ठीक है ना. सो इनिशियली हो सकता है कि टूल की जो लोकेशन है वो यहाँ पे हो, ठीक है ना. योर टूल माइट बी एट दिस लोकेशन, इट मे बी एट दिस लोकेशन, इट मे बी एट दिस लोकेशन. फॉर एग्जांपल यहाँ पे है आपका टूल, एंड इफ़ यू go for the tool change, so normally when the tool change occurs, so you might have observed the machines that
normally the turret comes out of its slot and then it moves downward and then it rotates. जो डिज़ायर टूल है वो अपनी जगह पे आ जाता है एट द करंट लोकेशन एंड देन द टरेट मूव्स बैक टू its particular slot. So during that tool change, if for example the current position of the turret is somewhere here, so the tool or the turret may hit the chuck of the machine, it may hit the workpiece. So it is always better to first locate the tool in your program to some safer location and you know your dimensions. Dimensions जो है वो आपको पता है कि वर्क पीस के कितना लेंथ होगा, उसका डायमीटर कितना है. सो द टूल और द टरेट मस्ट बी अवे फ्रॉम द आउटर पैराफ्री ऑफ द वर्क पीस. ठीक है ना. सो आई विल एक्सप्लेन दिस पोजीशन ऑफ द वर्क पीस लेटर के ये यहाँ पे आपका एक्स और वाई लोकेशन क्या है, बट लेट मी इंक्लूड दैट लाइन फॉर माई सेफ्टी. So I will write G00 और X 100 मैंने यहाँ पे मेंशन किया भी हुआ भी है इसका जो डिज़ायर्ड लोकेशन है, और Z में 50 लिख दूँगा. So initially when you define the system of units for absolute system में, तो ये एब्सोल्यूट सिस्टम में चला जाएगा x 100 लोकेशन पे और z 50 लोकेशन पे मिलीमीटर्स, यानी 100 मिलीमीटर होंगे और 50 मिलीमीटर होंगे एज हमारा कोड जो है वो मैट्रिक सिस्टम का यूज़ हुआ है विच इज़ G21. फॉर दिस प्रोग्राम माई रेफरेंस पॉइंट इज़ दिस वन, और यहाँ पे x मेरा जो है वो 80 है. आई विल एक्सप्लेन इट लेटर, but for this location I just want to show you कि ये कहाँ से रीड कर रहा है. ठीक है ना. So my reference point for this program is this one, जो एरो आपको नज़र आ रहा है, जो upper right corner है वर्क पीस का. So here x is 80 और z जो है वो 0 है. So if z is 0 over here, so x z 50 अगर आप देते हैं, ठीक है ना, so this is the right direction. एक्स जेड पॉजिटिव वैल्यू, सो 0 से 50 यूनिट्स जो है वो अवे चला जाएगा आपका टरेट. एंड देन एक्स इज़ 80 ओवर हेयर, और हमारा यहाँ पे मैंने लोकेशन एक्स जो है वो 100 दी है. ठीक है ना. सो 80 यहाँ पे है, सो ये 20 मिलीमीटर जो है यहाँ से ऊपर चला जाएगा. ठीक है ना. सो दिस विल बी एक्स 100 एट दिस लोकेशन और एक्स जेड 50 डायरेक्शन में वहाँ पे चला जाएगा. And now it is some safe position where you can make that tool change. ठीक है ना. So tool change से पहले आपने एक safer location पे जो turret है उसको move करना होगा. ठीक है ना. So always try to remember this safe location for the tool change. So जब भी आप एक operation, for example if you have multiple operations on during those operations you want to change the tool in between the operations, so for that you must first locate the tool to some desired safer location, और वहाँ पे आप tool change perform करके then you will come back to the next operation. So this is a complete set of block which basically is the machine setup step. तो मशीन जो है यहाँ पे आपका पूरा सेटअप प्रिपेयर हो गया है ऑपरेशन स्टार्ट करने के लिए. नाउ वी हैव टू थिंग्स इन माइंड कि ये ऑर्डिनेट्स आप किस तरह डिफ़ाइन करेंगे और ये मशीन पे किस तरह डिफ़ाइन होती है. तो लेट मी फर्स्ट कम बैक टू दिस फिगर. हर एक मशीन पे कोई भी CNC मशीन जब आप स्टार्ट करते हैं तो यू हैव अ रेफरेंस पॉइंट. डिफ़ॉल्ट रेफरेंस पॉइंट फॉर लेथ मशीन इज़ नॉर्मली द सेंटर पॉइंट ऑफ द चक. ठीक है. जो सेंटर पॉइंट का चक होता है यहाँ पे. ठीक है ना. सो ये पोजीशन जो है ये रेफरेंस पॉइंट होता है, एंड एग्जैक्टली एट द सेंटर वी हैव
x 0 और आपका जो z है वो भी आपका 0 होता है. And in every CNC machine, we have a reference button, and if you press that reference button, so you can change this initial origin point of the machine to anywhere else. So उसका procedure यही होता है कि manually you move the cutter in the X, Y and Z location, and फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे जो है वो मैं कटर मैनुअली ले आता हूँ. सपोज ये है, ठीक है ना. सो व्हाट वी नॉर्मली डू इज़ दैट वी ब्रिंग द कटर एट एनी डिज़ायर्ड लोकेशन, और वहाँ पे मैं रेफरेंस पॉइंट जो है वो डिफ़ाइन कर लेता हूँ. आई कैन मेक दिस एज द रेफरेंस पॉइंट, ठीक है ना. ठीक है ना, ये अगर आपका कटर जो है यहाँ इस पोजीशन पे लाते हैं, ठीक है ना. सो यहाँ पे आप 0 0 डिफाइन कर सकते हैं. यू कैन डिफाइन 0 0 ओवर हेयर. यू कैन गिव बेसिकली एनी वैल्यू फॉर द रेफरेंस पॉइंट. So if you want to define a new reference for any machine, so just move the cutter at your desired location, and then when you will press the reference button on the machine panel, जो machine का panel होता है उस पर reference button का एक switch होता है. So if you press that, so display आ जाएगा monitor पे, and it will ask you to enter the X, Y and Z value. So whatever value you entered there, so that will be recorded as the reference point. So for example, अगर मैं tool जो है यहाँ पे locate कर दूँ and I press the reference mode switch, so it will ask me to enter the XYZ value. So for example, if I say that write X 0, Y 0, Y तो इसमें नहीं है, 2 axis machine है, X0 and Z0. So it will record this point as the reference point, and all the values will be measured from this particular reference point. So if suppose I write instead of X0 Z0, if I say that take this as X50 and Z, let us say 0. So it will take this point as X50 and Z0. So whatever value you want, you can enter for the reference point. So if I take suppose this point and here I say X0 and Z0, so it will record this as the origin point. और आपका जो वैल्यू यानी X100 जो है वो यहाँ से फिर measure होगा. So it will measure X100 from this point. So ये आपका यहाँ से यहाँ तक जो distance होगा, that will be X100, and from this point to this point longitudinal dimension will be 50 units. So again this is not of your concern कि मशीन पे आप जो है वो किस तरह करेंगे, क्योंकि पेपर में अगर क्वेश्चन आता है तो यू जस्ट विल ओनली मेंशन योर डिज़ायर पॉइंट कि मैंने ये रेफरेंस पॉइंट लिया हुआ है और इस पे एक्स और जेड की जो है वो ये वैल्यू है, ठीक है ना. सो इट विल बी एन ओपन चॉइस फॉर यू पीपल टू टेक एनी पॉइंट एज द रेफरेंस पॉइंट. और चूँकि लेथ मशीन है तो लेथ मशीन में आपका स्पिंडल का डायरेक्शन जो है दैट इज़ लॉन्गिट्यूडनल. सो लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस जो है इट इज़ द जेड एक्सिस, और जो रेडियल एक्सिस है वो एक्स एक्सिस होता है बाय डिफ़ॉल्ट किसी भी लेथ मशीन का. सो कीप दिस इन माइंड. सो कमिंग बैक टू द प्रोग्राम, सो दिस इज़ द फर्स्ट स्टेप. प्रोग्राम सेटअप आपने कर दिया है, and then you will start the removal operation, the material removal operation, which in this case is the plane turning operation. So plane turning के लिए अब अगर आप देखिए तो
suppose this is point number A. Yeah. Or let me instead of A, B, C, let us use numbers. ठीक है ना? So suppose this is point number 1, the current location. ठीक है ना? So ये point जो है वो आपका point number 1 है, and at point number 1 your x value is 100 and z value is 50. अब आपने ये ऑपरेशन स्टार्ट करना है, तो यू कैन ब्रिंग दैट कटर डायरेक्टली एट दिस लोकेशन. अगर फॉर एग्जांपल नेक्स्ट लोकेशन यानी आपकी कटर की ये होगी, ये होनी चाहिए बेसिकली, है ना, और इसके बाद आपका ऑपरेशन जो है वो फिर स्टार्ट होगा. बट in this case as the spindle is revolving and if you directly hit the workpiece with the cutter at the maximum feed rate, क्योंकि ये आपने सिर्फ पोजीशनिंग करनी है, so during positioning the cutter may hit the revolving workpiece और वो उसको offset कर सकता है, आपका कटर जो है वो डैमेज हो सकता है. So it is always better to first bring the cutter to some safer location at the start point of the operation और उसके बाद आपने कंट्रोल स्पीड पे आगे जो है वो कटर को मूव करना होता है. So for that safety, so that the cutter should not directly hit the workpiece, we will leave some offset distance in between the cutter and the workpiece before start of the operation. So this will be the location where you will have to set the tool, क्योंकि ये operation आपने start करना है. So this will be the move of the cutter. So the cutter will maybe somewhere along this line, away from the workpiece. Suppose ये offset distance जो है वो 5 मिलीमीटर का आप रखते हैं या 2 मिलीमीटर का आप रखते हैं या let us say 3 मिलीमीटर का रखते हैं. And here I have taken this point as the reference point and I have taken the x value as the diameter of the workpiece. So whatever is the diameter of the workpiece, that will be the value of x at this particular point. So जो upper right corner है, normally program जब मैं बनाता हूँ तो I take this as my reference point and I directly take the value of the diameter और z यहाँ पे हमारा 0 होता है. So any operation beyond this will be a negative value और वो आपको पता होगा. फॉर एग्जांपल अगर 75 मिलीमीटर आपने इस डायरेक्शन में मूव करना है, सो दैट विल बी सिंपली -75. ठीक है ना. सो यू विल नॉट नीड टू डू एनी एडिशनल कैलकुलेशन इन द प्रोग्राम. ठीक है ना. सो डायरेक्टली जो डायमेंशन की वैल्यू है वही वैल्यू जो है वो आप प्रोग्राम में इंटर कर लेंगे. एक्स इफ़ यू टेक एक्स एज डायमीटर ओवर हेयर, सो जितना आप डायमीटर रिमूव करेंगे, कम करेंगे, वही वैल्यू डायरेक्टली जो है वो आप प्रोग्राम में इंटर करेंगे. सो इट इज़ ऑलवेज बेटर टू यूज़. अब ये आपकी मर्ज़ी है, आप ज़ीरो भी ले सकते हैं. ठीक है ना. सो इफ़ यू टेक एक्स एज ज़ीरो ओवर हेयर, तो यहाँ पे भी जेड की तरह जितना डायमेंशन आप कम करेंगे, सो दैट विल बी अ नेगेटिव वैल्यू. सो कीप दिस इन माइंड दैट at this point x is 80, so along this line x हमारा 80 है और z जो है वो along this line और z is 0. So I will keep 3 millimeter offset distance in between the cutter and the workpiece. So new location for the cutter will be this point. So suppose this is at position number 2. ठीक है ना. सो फर्स्ट पोजीशन जो है वो यहाँ पे x 100 है और z जो है वो 50 है. एट दिस पॉइंट व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ x एंड z. ठीक है ना. सो आपने यही वैल्यूज़ जो है वो प्रोग्राम में इंटर करनी होगी. ठीक है.
है ना। सो एट दिस लाइन आपका डायमीटर जो है वो 60 मिलीमीटर है। सो डायमेंशन से हमें पता लग गया है कि यहाँ पे x जो होगा वो आपका 60 है। So here it is 60. I do not have basically a touchpad, so that is why माउस से ही मैं कर रहा हूँ. So anyway, here x is 60 और z जो है यहाँ पे आपका यानी इस पॉइंट पे 0 है. सो अगर 3 यूनिट्स आप इस डायरेक्शन में जाते हैं, सो दैट इज़ +3. So this means that at this point my z value will be z3. तो प्रोग्राम में पॉइंट नंबर 2 अगर आप डिफाइन करते हैं, सो दैट विल बी x 60 एंड z आपका 3 होगा. सो x 60 और z 3 में अगर आप प्रोग्राम में इंटर करते हैं तो व्हाट विल बी द कोड फॉर दिस पार्टिकुलर मूव. ठीक है ना. अब मूव जो है वो आपका ये मूव है. ठीक है ना. यानी फ्रॉम पॉइंट नंबर 1 से पॉइंट नंबर 2 तक जो है वो आपने कटर को मूव करना है. सो इट इज़ अ डायगोनल पाथ, इट इज़ द शॉर्टेस्ट पाथ. एंड व्हाई वी will take this path, this is because no cutting operation is involved in this move. You know? So it must be G0 कोड. सो इसमें G0 का कोड ही आप अगर यूज़ करें तो बेहतर होगा. वी कैन यूज़ G1, बट फॉर G1 यू विल देन हैव टू स्पेसिफाई द फीड रेट, जो कि इस केस में आपको ज़रूरत नहीं है फीड रेट की. So if you write G00, so it will move the cutter from this location to this location at the maximum feed rate of the machine. Whatever is the maximum speed of the machine, वही speed जो है वो adopt कर लेगा. You know, so the next line that I will include in my program is G00 और यहाँ पर मैं x जो है वो आपका 60 मिलीमीटर है, तो 60 पोजीशन पे आ जाएगा. एंड z इज़ 3. तो Z03 भी आप लिख सकते हैं, सिंपली Z3 भी आप लिख सकते हैं. ठीक है ना. सो इफ़ यू राइट this code, so the cutter will move to point number 2. ठीक है ना. so इसको मैं जो है वो मेंशन कर लेता हूँ. so let me राइट, ये पॉइंट का आपका जो है प्रोग्राम में दिस इज पॉइंट नंबर 1. ये लोकेशन जो है इट इज़ लोकेशन नंबर 2. So ये सेकंड लोकेशन है. So now you have bring the cutter at location number 2 अपनी लाइन में आ गया है. and now you can gradually move the cutter to hit the work piece and then remove the material. अब ये आपने एक कंट्रोल्ड फीड रेट के साथ ये मूव करना है. ठीक है ना. so यहाँ से यहाँ तक जो है वो मैक्सिमम फीड रेट था. अब नेक्स्ट जो आपका टूल मूव करेगा इट विल बी इन दिस डायरेक्शन, और फाइनल पॉइंट या फाइनल लोकेशन टूल की ऑपरेशन की क्या होगी, इट विल बी ओवर हेयर. ठीक है ना. सो आपने यहाँ तक टूल को जो है वो मूव करना है along this straight path. So it is an axial move, so you will use G01 command. G00 अब यहाँ पे आप यूज़ नहीं कर सकते बिकॉज अगेन इट विल मूव द कटर एट द मैक्सिमम फीड रेट, और मैक्सिमम स्पीड पे डायरेक्टली आप वर्क पीस को जो है वो हिट नहीं कर सकते. सो
this will be point number 3 in our program, ठीक है ना. सो पॉइंट नंबर 3 जो है वो आप अब इस पॉइंट के बाद डिफाइन करेंगे. सो माय नेक्स्ट command or block in the program will be G01 और इसके साथ में फाइनल जो x और z की लोकेशन है वो स्पेसिफाई कर दूंगा. सो हेयर यहाँ पे आप अगर आप देखें तो z की क्या वैल्यू होगी. यहाँ पे +3 थी. जब वर्क पीस को टच करेगा सो हेयर z विल बी 0. And then when you progress the tool in this direction, so basically you are moving in the negative z direction, ठीक है ना. So z axis में आप आगे जा रहे हैं and x is constant, ठीक है ना. So x आपका constant है. So you will move the cutter to this point. इस point पे आपका z जो है वो 75 होगा, -75, ठीक है ना. ये total distance जो है वो आपका -75 है. So I will write z -75. And then you will write the x value. So now if I write x 60, so this means that x is not changing. So अब final value मेरी जो है वो z -75 और x 60 है. So this means that the tool will only move in the z direction, क्योंकि इससे पहले जो ब्लॉक में x की वैल्यू है that is 60. So it doesn't change. Now if you write this line in the program और इस प्रोग्राम को आप एग्जीक्यूट करते हैं तो at this particular point the program will stop and it will give you the error message. Why? Because the command which we have used is G01 command. So G01 will move the cutter linearly in linear direction but at some controlled speed. वो controlled feed rate जो है वो अभी हमने इसके साथ define नहीं किया. So whenever the G1 command is there, so you will also have to use the F specifier. F जो है वो feed rates के लिए हम use करते हैं, ठीक है ना. So if I suppose say f is 0.5, so this means that it will be 0.5 millimeter per revolution. यानी एक revolution में ये 0.5 millimeter जो है प्रोग्रेस करेगा कटिंग टूल, है ना. सो जितनी आपकी कम वैल्यू होगी उतना ही आपका जो कट है वो फिनिश आएगा, ठीक है ना. एंड दैट कम्स फ्रॉम दैट बेसिक फार्मूला पाई डी एन का जो फार्मूला है, so I will not go into that detail, but you will have to ये basically ये feed rates और ये आपके process plan में ये values given होंगी, so you will record that. Otherwise you can use the basic formulation which is the cutting speed is equal to pi d n और उसके reference से जो बाकी formula है वो आप use कर सकते हैं, you know. We will take some imaginary value. For example, let us say the feed rate is 0.5 millimeter per revolution. So I will simply write G1 Z location, X location और feed rate उसके साथ में define करूँगा. Now if I execute this program, so it will move the cutter from second position to third position at the feed rate of 0.5 millimeter per revolution. So एक तो ये है कि ये प्रोग्राम जो है वो आप इंटर कर सकते हैं, ठीक है ना. एंड आई विल री राइट द सेम कोड अगेन G01 Z -75 and F 0.5. So let me a little bit इसको मैं सेपरेट कर लूँगा. सो 0.2 जो है वो आपका ये कोड ये लाइन था, ये ब्लॉक था.
जो लोकेशन नंबर 3 है इन दोनों में से कोई भी हो सकती है, ठीक है ना. सो लेट मी राइट लोकेशन और हेयर आल्सो. सो ये आपकी थर्ड लोकेशन है, आइदर दिस वन और दिस वन. सो इफ यू राइट G1Z-75 एंड फीड 0.5, x की वैल्यू मैंने यहाँ पे स्किप कर दी है. सो इफ यू हैव सिचुएशन लाइक दिस, इफ स्पेसिफायर इज मिसिंग विद इन अ ब्लॉक, और वो मिसिंग जो एक्स वाई जेड के रेफरेंस से मैं बता रहा हूँ, सो इट विल टेक द प्रीवियस वैल्यू ऑफ द डिजायर्ड स्पेसिफायर. यहाँ पे अगर आप देखें तो x नहीं है, सो इट विल लुक फॉर द x वैल्यू दैट यू हैव यूज्ड बिफोर दैट पर्टिकुलर ब्लॉक. सो अगर इस ब्लॉक में नहीं है तो वो अगला ब्लॉक देखा, अगर उसमें नहीं होगी, सो वट एवर इज the last value of the x, it will take that value for this particular line. So चूंकि x जो है वो मेरा कांस्टेंट है, चेंज नहीं हो रहा, so I can write only the z value. So it will automatically take the previous value for the x, or you can write the previous value as well in the same command, ठीक है ना. So ये आपकी मर्जी है, आप ये कोड यूज़ करते हैं या ये कोड यूज़ करते हैं, and result will be same for both scenarios. Now you have completed the operation, so the next move will be again to bring that cutter back to some safer location, because अगर इसके बाद आपने कोई दूसरा ऑपरेशन करना हो और वो आपने उसके लिए कटर जो है वो चेंज करना हो, तो वही सेफर लोकेशन पे आप लेके जाएंगे, टूल चेंज करेंगे, एंड देन यू विल परफॉर्म द सेकेंड ऑपरेशन. So for example, you want to move this cutter back to position number 1. So again you have two options. एक तो डायरेक्टली आप यहाँ से यहाँ पे मूव कर सकते हैं कटर को. सो इन दैट केस जो यहाँ पे आपके पास जो शोल्डर बचेगा ऑपरेशन के बाद, दैट विल बी लेफ्ट अनमशीन्ड, ठीक है ना. सो ये कॉलर जो है इट विल बी अ रफ कॉलर. सो इफ़ यू वांट टू मेक दिस कॉलर एज अ फिनिश वन, अगर ये बर्स, ये कट मार्क्स जो है ये भी आप रिमूव करना चाहते हैं, सो इट इज़ ऑलवेज अ गुड प्रैक्टिस टू फर्स्ट मूव द कटर along this collar, along this shoulder. इस डायरेक्शन में थोड़ा सा आप ऊपर कटिंग टूल को ले जाएं, और this will be the next desired location in our case if we want to have a full finish collar. Yeah. So this will be position number 4, and as we want to remove that extra burr marks, that materials from the shoulder, so again it will be at some specified speed rate, एक desired कटिंग स्पीड पे आप जो है टूल को आगे मूव करेंगे. सो अगेन आई विल यूज़ द G1 कोड, ठीक है ना. सो ये G1 में ही हम आगे जाएंगे. सो व्हाट आई कैन राइट इन माय प्रोग्राम इज़ दैट लीनियर कट है, तो G01 में यूज़ करूँगा, एंड देन आई विल गिव द x एंड z वैल्यूज़, ठीक है ना. सो अब यहाँ पे अगर आप देखें तो योर z वैल्यू इज़ कांस्टेंट बिकॉज यू आर ओनली मूविंग इन द x डायरेक्शन, आप वर्टिकल मूव ले रहे हैं, ठीक है ना. अगर आप डायगोनल मूव लेते हैं तो उसमें फिर x और z जो है वो दोनों वेरी होंगे, ठीक है ना. सो इफ़ इट इज़ अ लॉन्गिट्यूडनल मूव, सो यू आर मूविंग इन द z डायरेक्शन, x कांस्टेंट होगा. इफ़ यू आर मूविंग वर्टिकली, so this means that you are moving in the x direction, आपका z constant है. So I can write G01, अगर z मैं mention नहीं करूँगा तो it will accept this, क्योंकि z जो है वो constant है. So it will take the previous value of the z, which is -75. So otherwise if I want to write a complete line, so I can write z -75 x को अगर आप देखें तो again you have to bring the cutter at some
सेफर लोकेशन अवे फ्रॉम द वर्क पीस, ठीक है ना। सो यहाँ तक तो आपकी एक्स की वैल्यू जो है वो डायमीटर है 80 मिलीमीटर है, तो योर कटर शुड बी अबव 80 मिलीमीटर। सो इसको मैं 85 कर सकता हूँ, 84 कर सकता हूँ, 83 कर सकता हूँ, वट एवर safe value you want. So let us write 85 millimeter. Yeah. So this will be the fourth location of the cutter, and we are moving that cutter in the G1 command at controlled feed rates. और यहाँ पे फिर आपने feed rate जो है वो देनी होगी. So for example, if I want to give some other value for the feed for this operation, so I can, like for example, अगर मैं यहाँ पे 0.5 के बजाय 0.2 की वैल्यू मेंशन करता हूँ, सो this will be the command for location number 4, and I will rewrite the same command. इसको मैं directly G1 अगर मैं skip कर दूँ, and if I write Z minus 75, no, X 85, let me write another value also, ठीक है। So these two lines will move the cutter to the fourth location, which is this one. So if you write G01, so G01 means that you will move the cutter at some desired feed rate. Z minus 75 अगर आप लिखते हैं तो it is the previous value, you know. So I can skip this value like I have skipped this in this the second line. So मैं directly X85 भी लिख सकता हूँ, you know. So if I write G1 X85 or feed 0.2, so it will be location number 4. There is no error. If I write G1 Z minus 75 X85 feed 0.2, again it is the fourth location. If I write G1 X85 और feed 0.2, so वही मीनिंग है इसकी। अगर मैं लिख दूँ G01 X85, so it will have the same meaning. अगर F वैल्यू मैं यहाँ पे मेंशन नहीं करता तो इससे पहले अगर आपने कोई फीड रेट की वैल्यू इंटर की हो प्रोग्राम में, तो इट विल डायरेक्टली टेक दैट वैल्यू फॉर फीड रेट for this particular block also, which will be 0.5 as in this case, you know. और अगर मैं कमांड नहीं लिखता, G01 अगर मैं स्किप कर दूँ, so as it is a move command, यानी ये आप लोकेशन डिफाइन कर रहे हैं, so I can simply write Z minus 75 X85 या सिर्फ X85 अगर मैं ले लूँ, so now the system knows that it is a move command but there is no code for that move, so it will look for the previous fresh available code. So ये आगे जाएगा, अगर G0 है तो it will take it as G00, अगर G01 है तो it will take this as G01, अगर G02 है या G03 है so it will take this code as G02 or G03. So as the latest available code before this block is G01, so it will take this as G01 command. So अगर एक कमांड में आपने यानी G1 में आपने मल्टीपल मूव्स कर रहे हैं, so there is no need to rewrite those codes again and again, you know. So simply G1 आप लिख दें और फिर जब नेक्स्ट ब्लॉक में आप XYZ की वैल्यू देंगे तो this means that that G1 code is continuing in that particular blocks. So if I write X85, so it will take G01, Z is missing, so it will take the previous value of Z, which is minus 75. The feed rate is missing, so it will take the previous feed value, which is 0.5. So अगर सिर्फ आप X85 इस लाइन के बाद लिखते हैं तो it will mean this, you know. So it will move the cutter
to the fourth location. And now your material removal process जो ये step है ये आपका complete हो गया है. So now it's time to for the system shutdown. So first you will have to bring that cutter back to position number 1, and as there is no cutting involved over here, so now here you will have to specify the G code parameter which is G00 because it is again positioning. ठीक है ना, यहाँ से यहाँ तक आप सिर्फ टूल को पोजीशन कर रहे हैं. So I will write G00 and then X100 है यहाँ पे और Z हमारा जो है वो 50 था. I will write 50. Okay. Okay. So it will bring the cutter back to the initial position which is position number 1. Okay. So program में ये आपका 1 location है. But still you can see that there are some functions of the machines which are still on. Spindle जो है वो अभी spinning कर रहा होगा. अगर कूलेंट आपने ऑन किया हुआ है तो कूलेंट जो है वो आपका जो है वो ऑन ही होगा. So before stop the program you must switch off the spindle, you must switch off other functions if they are on. So अब हमने चूँकि कूलेंट यूज़ नहीं किया, सिर्फ स्पिंडल हमारा ऑन है, तो आई कैन स्पिंडल स्टॉप के लिए जो है वो स्टार्ट के लिए कौन सी कमांड मैंने आपको बताई थी, M3 स्पिंडल फॉरवर्ड, M4 स्पिंडल रिवर्स और M5 जो है वो स्पिंडल स्टॉप के लिए है. ठीक है. सो आई विल राइट M5 या M05, ठीक है ना, in my next block. ठीक है ना. So now this M5 can be a separate block. You can write this M5 with this line also. Okay. So both formats are acceptable. So when it interprets G00, so it will look for the X, Y and Z values. ठीक है ना. So G00 में X, Y, Z जब वो execute कर लेगा, and if there is another specify over here, so it will interpret it, और ये मशीन फंक्शन है तो M5 जो है वो इसके बाद एग्जीक्यूट होगा. तो अगर एक ब्लॉक में आपके पास मल्टीपल स्पेसिफायर्स हैं तो जिस सीक्वेंस में आपने कोड्स यूज़ किए हुए हैं उसी सीक्वेंस में मशीन उसको एग्जीक्यूट करेगा. तो फर्स्ट इट विल मूव द कटर टू X100 Z50 लोकेशन एट मैक्सिमम फीड रेट एंड देन इट विल स्टॉप द स्पिंडल. और अगर मैं फॉर एग्जांपल प्रोग्राम जो है वो स्टॉप करना चाहूँ, सो फॉर प्रोग्राम स्टॉप द कोड दैट इज यूज्ड इज M30. सो M30 मैं यहाँ पे भी लिख सकता हूँ, आई कैन राइट इट ओवर हियर, एक लाइन में भी मैं लिख सकता हूँ. ठीक है ना. सो इट्स अप टू यू कि कौन सा फॉर्मेट जो है वो आप अडॉप्ट करते हैं. सो आई कैन राइट दिस एज G00, X100, Z50, M5 एंड M30. सो first it will stop the spindle and then it will stop the program. So program stop में यही होता है कि M30 जब आप लिखेंगे तो it will first turn off all the operations. अगर for example spindle on है तो उसको भी off कर लेगा, coolant on है तो उसको भी off कर लेगा, and then finally it will move your cursor back to the start point of the program. कि अगर आपने दोबारा उसे execute करना हो तो cursor जो है आपका top पे होगा. सो ये एक साइक्लिक प्रोसेस है. सो अगर M5 आप नहीं लिखते यहाँ पे भी तो स्टिल इफ़ यू राइट M30 तो फर्स्ट इट विल टर्न ऑफ द स्पिंडल एंड देन इट विल मेक द प्रोग्राम stop. But it is always better to use an appropriate code for each and every function of the machine. So this was a simple operation of plane turning. मैंने
कोशिश की है कि पूरी डिटेल्स आपको बता दूं सो दैट यू हैव नो डिफ़िकल्टीज़ फॉर अदर प्रोग्राम्स। इसमें एक दो तीन और कोड्स भी है, यानी फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपने कूलेंट ऑन करना है, ठीक है ना, सो कूलेंट अगर आपने ऑन करना हो तो उसके लिए M8 की कमांड यूज़ होती है। सो यू कैन अगेन रेफर बैक टू द कोड लिस्टिंग। M8 जो है वो कूलेंट ऑन के लिए है और M9 जो है वो कूलेंट ऑफ के लिए है। तो फॉर एग्जांपल इफ़ यू वांट टू टर्न ऑन द कूलेंट, so let me first write that code which is M8. Now what will be the appropriate place where you can place this code or write this code, ठीक है ना। सो अब देखिए यहाँ से यहाँ तक जो मूव है अभी ऑपरेशन स्टार्ट नहीं हुआ, so this is the most appropriate location where you can turn on the coolant, और क्योंकि इस पॉइंट के बाद आपने ऑपरेशन स्टार्ट करना होगा, ठीक है। सो ये लोकेशन जो है टू लोकेशन, इससे पहले जो है वो आपने यानी इसके बाद आपने कूलेंट जो है वो ऑफ करना होगा। सो आई कैन राइट दिस कोड आफ्टर दिस लोकेशन, ठीक है ना। सो मैं यहाँ पे एक सेपरेट ब्लॉक भी लिख सकता हूँ और आई कैन राइट इट इन द सेम लाइन आल्सो, ठीक है ना, यानी यहाँ पे मैं कोड जो है वो लिख सकता हूँ। सो इट विल फर्स्ट ब्रिंग द cutter to G00, X60 and Z3 location and then it will turn on the coolant. So अगर आपने coolant on किया हुआ है, so then what will be the appropriate place where you can turn off that coolant? So coolant off के लिए आपका जो कोड यूज़ होता है that is M9. So M9 जो है वो देखिए ये ऑपरेशन हो रहा है, यहाँ पे आपका कूलेंट ऑन होना चाहिए, फिर ये शोल्डर कटिंग के लिए ऑन होना चाहिए, एंड दिस इज द प्लेस आफ्टर विच यू डू नॉट नीड एनी कूलेंट। सो आफ्टर द फोर्थ लोकेशन यू कैन देन स्विच ऑफ द कूलेंट। सो फोर्थ लोकेशन जो है आपकी यही है, ठीक है ना। सो आप जो है वो यहाँ पे इंक्लूड कर सकते हैं। So before going to that safer location, first it will turn off the coolant and then it will move the cutter back to this desired location, ठीक है, और ये आपका स्पिंडल यहाँ पे स्टॉप हो जाएगा। So this is how you will write a CNC program for any machine, ठीक है ना। So ये तो एक सिंपल ऑपरेशन है। अब फॉर एग्जांपल अगर आपने लेट्स से फेसिंग का ऑपरेशन करना है, अगर आपने ये मटेरियल रिमूव करना है, तो इसमें आपका अगर फॉर एग्जांपल कटर जो है वो फिर यहाँ के बजाय यहाँ पे आपका कटर होना चाहिए। सो यू विल हैव टू ब्रिंग द कटर टू दिस लोकेशन, ठीक है ना। सो यहाँ पे आपका कटर आएगा, इसके बाद फिर नीचे डायरेक्शन में आपने मूव करना होगा, ठीक है ना। एंड द मेथडोलॉजी रिमेन्स द सेम, ठीक है ना। यू हैव टू कैलकुलेट द एग्जैक्ट पॉइंट्स ओवर हेयर, और फिर ये मूव जो है वो G00 की होगी, इसके बाद जो मूव होगी दैट विल बी ऑफ G01, ठीक है ना। सो अब यहाँ पे आपने मटेरियल रिमूव करना होगा, तो फाइनल लोकेशन जो कटर की होगी इट विल बी समवेयर ओवर हेयर, एंड देन आपने कटर को इस डायरेक्शन में मूव करना होगा, आपने ये पॉइंट डिफाइन करना होगा और वापस जाना होगा, या डायरेक्टली आप यहाँ से, यानी ये ऑपरेशन जब आपका ख़त्म हो जाएगा एज इट इज़ एट द एंड ऑफ द वर्क पीस एंड फेस है, तो यू कैन डायरेक्टली मूव द कटर बैक टू दिस लोकेशन फ्रॉम दिस पॉइंट। सो ये पॉइंट्स बेसिकली आपने डिफाइन करने होते हैं। सो इफ़ यू हैव लाइक फॉर एग्जांपल सम मल्टीपल ऑपरेशन, अगर फॉर एग्जांपल आपने कुछ इस तरह ऑपरेशन करना है कि स्टेप टर्निंग है फॉर एग्जांपल, इन दिस केस सो यही सिनेरियो है। फर्स्ट यू विल हैव टू डिफाइन दिस पॉइंट, यहाँ पे आपने XYZ, यहाँ पे आपका कटर आएगा पहले। लेट मी चेंज द कलर सो दैट यू अंडरस्टैंड। सो ये पॉइंट होगा, देन ये G00 होगी,
इसके बाद ये मूव जो होगी इट विल बी इन G01. This will be the next location of the tool. Then you have to move the cutter along this shoulder. G01 पे ही होगी. So you have to define this point. Then you have to move the cutter along this path. ये आपकी next location होगी tool की. So this will be next location. And then आपने ये shoulder finish करना होगा और somewhere over here you will have to locate the cutter. Keeping this same methodology, इसमें यहाँ से यहाँ तक जो move होगा that will be G00, ठीक है ना. So you will write G00 X और Z की यहाँ पे जो भी location बनती है, and then within after that you will simply write G01 G01 होगा और G01 में आपने अब इस डायरेक्शन में अगर आप मूव कर रहे हैं तो यू आर ओनली मूविंग इन द Z डायरेक्शन. सो Z की कुछ नेगेटिव वैल्यू जो भी होगी, ठीक है ना. फॉर एग्जांपल यही वैल्यू है 75 है, तो यहाँ पे आपका होगा Z minus 75. And then next move is again in the Z direction. So Z direction में अगर आप ऊपर जा रहे हैं, फॉर एग्जांपल यहाँ पे आपका डायमीटर जो है वो लेट अस से 50 यूनिट्स है, तो यू आर ओनली मूविंग इन द X डायरेक्शन, है ना. तो यहाँ पे फिर आप G01 लिखने की ज़रूरत नहीं है, फीड रेट लिखने की ज़रूरत नहीं. हाँ, यहाँ पे आप फीड रेट जो है वो स्पेसिफाई करेंगे बिकॉज यू आर स्टार्टिंग द G01 कमांड. सो आफ्टर G01 इफ आई सिंपली राइट X वैल्यू in this case let us say 50 है यहाँ पे, ठीक है ना. So if I write X50, so it will move the cutter along the X direction to 50 units. If in the next line if I write again the Z value, you know, so यहाँ पे आप देखिए आप X की वैल्यू कांस्टेंट है, so X will remain be at 50 units. और Z डायरेक्शन में अगर मैं मूव कर रहा हूँ, सो फर्दर माइनस 75 mm है और फर्दर आप लेट अस से 100 mm तक या जितना, तो यू विल गिव दैट Z वैल्यू एंड इट विल बी सम नेगेटिव वैल्यू. सपोज 90 यूनिट्स तक आप गए हैं, तो यहाँ पे आपका Z माइनस 90 होगा. अगेन फॉर द नेक्स्ट लोकेशन यू आर मूविंग इन द X डायरेक्शन. X आप वेरी कर रहे हैं, सो लास्ट में आपका X आ जाएगा एंड इट विल बी अबव दिस 80 mm डायमीटर. सो मे बी 85 या 84 जो भी आप वैल्यू लिखते हैं, ठीक है ना. तो ये वहाँ पे कटर ले जाएंगे आप एंड देन ये फाइनल लोकेशन होगी कटर की. सो द G code programming is very simple. You will only need to define the X, Y and Z coordinates. So it is very, very simple, and I hope that this video might have solved some questions regarding the codes that you have studied. क्योंकि आपने लैब कोर्स लैब भी की है प्रोडक्शन ऑटोमेशन की, तो उसमें G कोड प्रोग्रामिंग ही होती है, उसमें आपने ये कोड्स पढ़े होंगे. बट दिस इज़ अ रेफरेंस वीडियो फॉर दैट प्रोग्रामिंग, कि अगर मैनुअली आप प्रोग्राम करना चाहते हैं तो आपने सिर्फ जो रिलेटिव मूव्स है इन बिटवीन द वर्क पीस एंड द कटर वो आपने डिफाइन करने होते हैं. सो आई विल बी अपलोडिंग नेक्स्ट रेफरेंस वीडियो फॉर दैट आल्सो, जिसपे थोड़ी सी और डिटेल जो है और एक्सप्लेनेशन इस प्रोग्राम की हम डिस्कस करेंगे. सो फॉर दिस वीडियो दिस इज़ इनफ. सो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो जो है वो और भी यूज़फुल होगी आप